आइए आपको सीधे बीजेपी मुख्यालय लिए चलते हैं, जहां पर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता वहां पर चल रही है। कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस में प्रसार भारती के सदस्य भी रहे, कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन के साथ साथ विभिन्न पदों पे कांग्रेस में रहे और आज हम लोगों के साथ शामिल हो रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। मैं सबसे पहले इस अवसर पर हमारे बीच में भारत सरकार में मंत्री जनरल वीके सिंह जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रेम शुक्ला जी हम लोगों के बीच में हैं। संजय मयूख जी हमारे मीडिया के को हेड, वो हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले जनरल वीके सिंह जी से आग्रह करूंगा कि केशवन जी को पार्टी में शामिल करने के लिए पार्टी की सदस्यता की पर्ची और बुके देकर इनका स्वागत करें। जनरल वीके सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर मीडिया के साथियों को संबोधित करें। आप सब मीडिया मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस दिन बड़ा शुभ दिन है और शुभ इसलिए कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी केशवन जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपको जैसा कि अनिल बलूनी जी ने बताया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के बारे में बोलना बहुत मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी और सब हम इतिहास जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि उनका कद कितना बड़ा था, उनकी विद्वत्ता कितनी बड़ी थी। ही वॉज एन इंटेलेक्चुअल and he was one of the tallest leaders during the freedom movement. However, after independence, we all know how he was sidelined. उनको अलग कर दिया गया और एक तरीके से अगर आप इतिहास को देखें, उनको गुम कर दिया गया। बहुत कम उनका नाम लिया जाने लगा and it was one family which tried to say that they did everything, but Rajgopalachari ji was nothing in it. तो आज बहुत मुझे खुशी है कि केशवन जी जो कांग्रेस में भी रहे, काफी समय विदेश में रहे और आज हमारे बीच में वो इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है भारत को गौरवशाली बनाने में भारतीय जनता पार्टी के साथ होना उनके लिए महत्वपूर्ण है। और ये उनसे जब मैं बात कर रहा था तो मुझे लगा कि जितने समय वो बाहर रहे, उन्होंने देखा है कि बाहर क्या बदलाव आया है भारत के बारे में। पीपल लुक एट इंडिया टुडे डिफरेंटली देन व्हाट वी वर लुकिंग एट इट एंड आई वुड से दैट इन द लास्ट 9 years there has been a sea change in how people abroad view India and India's achievements. Unfortunately, out here in the din of many other things, that gets lost, but people who are outside, they're able to see that very clearly, despite all that is happening to drown those good things. Keshwanji has been ardent follower of how things are moving in India. He understands what is the politics of development and what is the politics of ensuring that each and every section of society prospers in the country. And that is how he decided to join Bharatiya Janata Party. I sincerely welcome him and I'm sure that with him we will have a very strong voice not only in Bharatiya Janata Party but also in the politics of Tamil Nadu. धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। मेरा
CR केसवन जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। जनरल VK सिंह जी, अनिल बलूनी जी, संजय जी, प्रेम शुक्ला जी और यहाँ उपस्थित आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज मुझे बीजेपी में दिल से स्वागत करने के लिए मैं जनरल VK सिंह जी और इन सब दिग्गजों को अत्यंत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी, उनके प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इन सब के उपस्थिति यहां पूज्य राजा जी सी राजगोपालाचारी के प्रति इनके गहरा आदर को दर्शाता है। I want to thank the elders for inducting me here into the world's largest political party, the Bharatiya Janata Party, especially on a day when our Prime Minister is in Tamil Nadu. Their presence here reflects the deep respect the Bharatiya Janata Party has for the founding fathers and mothers of our great nation, including C. Rajagopalachari. I told you I'm coming from Tamil Nadu. It's the land of the great Thiruvalluvar, the great poet. And there is a couplet of Thiruvalluvar, I think it's number 621. It says, Idukkan varungal nagaga, adanai adutturvadu agtoppadil. It's a little difficult to pronounce. Idukkan varungal nagaga, 621. It broadly means, when you're confronted with a crisis, you should face it with a smile. And that is the best way to vanquish the crisis. The quintessential example of this Thiruvalluvar quotation is our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. When we, not just India, the whole world was faced with the crisis of Corona, Narendra Modi ji calmly, with a smile, sternly took on this challenge with the help of selfless COVID warriors, health workers, ensured that the darkness and uncertainty enveloping us was prevailed upon and we were all safe. Narendra Modi ji trusted the Indian medicines, the Indian vaccinations. 225 crore vaccinations were given. 97% of Indians were given the first dose and about 90 of us have been fully vaccinated. So first I want to thank the Honorable Prime Minister and the selfless health officials who actually saved us. Narendra Modi ji's Pradhan Mantri, Narendra Modi ji's people-centric policies, their responsive corruption-free governance very importantly, and reform-based inclusive growth agenda has transformed India from a very fragile economy into the 5th largest economy in the world. Now we've surpassed Britain. His vision of Antyodaya has empowered even the last person in the last mile. PM Kisan Samman Nidhi, the government has transferred about 2.25 lakh crores to 11.4 small farmers. When you take the Swachh Bharat Abhiyan, 11.3 crore toilets have been built, giving dignity to people. Jal Jeevan Yojana, Har Ghar Jal, about tap water has been given for 11 crore people. 81 crore people were given free ration during the COVID time, it still continues. About medical treatment for about 5 lakh rupees for 50 crore people has been assured. I know people in my house from Vanchit were got Pakka Ghar through PM Awas Yojana. 3 crore houses have been built. And PM Ujjwala Yojana, about 9.5 lakh connections have been given, and Ujjwala 2 migrants have been taken care of. I just want to say that this has been tectonic transformation in the domestic scene. And not just that, I come from a computer background. The digital transformation is, incomparable. We have about 48 crore Jan-Dhan accounts. And in the 48 crore Jan-Dhan accounts, 55% are women. And I remember Amit Shah ji once said, earlier DBT was dealer-broker transfer. Now it has become direct benefit transfer, where 28 lakh crore rupees under various government schemes have been directly given to the people. And more importantly, 2.3 lakh crore has been stopped before it was being pillaged by middlemen. That has been stopped. Not just, as I said, the tectonic transformation in the domestic policy, but what personally touches me is the way the Bharatiya Janata Party and our Honorable Prime Minister have cherished and celebrated our heritage and history. If you see Kashi Sangamam, Tamil Sangamam, that is again in Tamil Nadu.
what more can you see in terms of national integration and pluralism? I mean, we were all so touched. And then if you take Azad Ka Amrit Mahotsav, I am not a Parivarvadi or a Vanshvadi. My father was an engineer, my grandfather was a news editor, my great-grandfather was in politics, but I joined as a new person. Hardly people remember the sacrifices of people. You may know me because I am Rajaji's grandson, but there are so many unsung heroes and heroines we don't know. Azad Ka Amrit Mahotsav has ensured that unsung mileposts, unsung icons, unsung events have been given their due, which is very, very honorable. I mean, that is something which has to be commended. And our Honorable Prime Minister on the world stage, if you see, I mean, I don't need to say that the way he's put national security, sir is here, he knows. The way national security has been given primacy in the steadfast leadership has ensured we've been in the forefront in the Committee of World Nations, and the true reflection of that is that the presidency of the G20 summit is happening for the first time in India, and we are heading it. I don't want to take much time. Looking forward to the future, there is a beautiful quote from the Mahabharata. It says, Janani, 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 Janmabhumishya Swargadapi Gariyasi. I think that is the motto of the Bharatiya Janata Party and our Honorable Prime Minister. The motherland and the mother and the motherland are greater than heaven. So motherland comes first. And he has very clearly laid his vision that in 2047, in 100 years of independence, we should be a Vishwaguru. And I'd like to say this, sir, in your presence. When Ram Setu was being built, Gilhari played a small role. Now that I've come into the Bharatiya Janata Party, when the bridge of peace, when the bridge of prosperity, when the bridge of progress is being built for the 2047 to become a Vishwaguru, I'm very glad that I'm in the BJP to play my own small role in nation building. Thank you. தமிழ்நாடு में चाहिए திருக்குறள் இன்று வந்து தமிழகத்திலே நமது பாரத பிரதமர் அவர்கள் நான் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது பல திட்டங்களை நிறுவிக் கொண்டிருக்கிறார். தமிழ்நாட்டில் இருந்து வரும் நான் இன்று பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இருந்திருப்பதை ஒரு பெரிய பேராக கருதுகிறேன். அவரது தலைமையிலே நாம் ஒரு வல்லரசு ஆவது நிச்சயம். நான் பல திட்டங்களை பற்றி கூறியிருக்கிறேன். ஏழைகளுக்காக, கஷ்டப்படும் மக்களுக்காக பல நல்ல திட்டங்களை பிரதம மந்திரி அவர்கள் தந்திருக்கிறார்கள். வருகின்ற காலத்திலே அவர் தலைமையிலே இந்தியா ஒரு வல்லரசு ஆகும் என்பதில் இம்மி கூட ஐயமில்லை. இன்று பாரதிய ஜனதா கட்சியிலே ஜெனரல் VK சிங்ஜி அவர்கள் முன்னிலையில் சேர்ந்ததை ஒரு மிகப்பெரிய பேராக